So good evening, everyone. My name is Maurya Hanspal, and in this session, we're gonna talk about time value of money. Time value of money. What is time value of money? And this concept is very prominent when the students are doing their courses of BBA, BCom, and MBA. Time value of money. Okay, so let's understand the time value of money with a basic example. If I give you two options right now, if I give you two options right now, I give you the option of getting 100 rupees. I say you that I will give you 100 rupees right now. But the two options to get that 100 rupees which you have right now are to get that 100 rupees now or to get that 100 rupees 10 years from now. 10 years from now. I'm saying I'm ready to give you 100 rupees. Okay. So you'll take the 100 rupees now or you will take this 10 years from now. So let's make 100 to like 1 lakh. So 1 lakh seems fine for all of you. If I say you, I'm ready to give you 1 lakh rupees, but I'm giving you two options for that. Either take like 1 lakh rupees right now or take 1 lakh rupees 10 years from now. Those who would have no knowledge about financial management or the time value of money, those people would say, give me 1 lakh right now. Whereas those who want to make a career in the field of finance and have understanding of financial management as well as time value of money. Okay. Oh, I'll repeat it once again. Those who do not have knowledge about financial management, okay, who do not have understanding about the time value of money, those people would have no difference between now or 10 years from now. Okay. They'll only make their decisions on the basis of their certain goals. That's it. If they have a certain goal, that is, if they want to buy something 10 years from now, they'll say, then I'll require that thing after 10 years from now. So give me this 1 lakh rupees from 10 years from now. Anyone who would have any liability at this present moment will say, like, give me 1 lakh right now. And I will buy that thing right now. Okay. So having the priority of taking this 1 lakh rupees right now is what you must aim for. And I will tell you why. Because those people who are asking for this 1 lakh rupee now, they are students of financial management. They have understanding about the time value of money. And what is time value of money? I'm going to tell you right now. Let's take a simple example. Out of this 1 lakh rupees, okay, let's see, you want to buy something. You want to buy a laptop. The cost of the laptop is 1 lakh rupees right now, as on 3rd January 2022. And 10 years from now is 3rd January 2032. And you want to buy a laptop. And you're comfortable buying the laptop either now. Also, if I give you money, like 10 years from now, still you are comfortable to buy the laptop after 10 years from now as well. So what you gonna do? An ideal person who has knowledge about time value of money will buy the laptop right now at the present cost of 1 lakh rupees. Because after 10 years from now or 5 years from now, this 1 lakh rupees won't remain 1 lakh rupees. Why? This 1 lakh rupees will lose its value. The note will not, the note of that money, like you might have like 2000 rupees ka note, 500 ka note, 100 rupee ka note. The note won't lose its value. Like the note like would remain same. But the amount written on that paper, उस कागज के टुकड़े पे जो 2000 लिखा है, उस कागज के टुकड़े पे जो 500 और 100 रुपए लिखा है, that will lose its value because of inflation. Inflation is one thing that will eat the value of your money or erode the value of your money. If you're able to buy this laptop for 1 lakh rupees on 3rd January 2022, you won't be able to buy that same laptop for 1 lakh only on 3rd January 2032.
The price of 1 lakh will change on to 2 lakhs or 3 lakhs or 4 lakhs. There is no limit for that. Okay, but the price won't remain just 1 lakh rupees. I'm not talking about plant and machinery that depreciates in value. I'm talking about the same laptop of that company. And that is why you need to take into consideration the amount of money or the concept of time value of money. The value of money that you have will erode because of inflation. And the classic example of this is in terms of oil. Okay, earlier there was a time when the price of oil was 50 per liter or 40 per liter. At that time, you used to get like 1 liter of oil for rupees 40 rupees. But now the price of the oil is 90 plus. And in recent days, it even crossed 100 rupees. पहले सिर्फ 40 रुपए में you used to fill your tank with 1 liter of oil. Now, to fill your tank, again with that 1 liter of oil, you have to pay 100 rupees. पहले 40 रुपए में 1 लीटर भरता था. ओके, अब 100 रुपए में पड़ता है. Right? So that is the thing of inflation. Your value of money is eroding. But now at the time when you are getting that oil, that 1 liter of oil, petrol, diesel, like whatever you fill in your cars or your vehicle, अगर आज तुम उसको like 40 रुपए दोगे तो 50% भी नहीं भरेगा. 500 ml भी ऑयल नहीं भरने वाला उसमें. And that is how the value of your money erodes because of inflation. आगे जाके चीजें सस्ती नहीं होंगी. The value of the things would rise. The value of the commodities would rise, the things would become costly. And oil is the classic example, महंगाई in simple terms. Inflation is nothing but the rise in the prices of the commodities. The losing of the purchasing power of your money. जो चीज आज तुम 40 रुपए की खरीद रहे हो, आगे जाके वो चीज तुम्हें 100 रुपए की मिलेगी. Okay? So that is the purchasing power of money. And that is, you need to take into consideration the concept of time value of money as well. यही इन्फ्लेशन है. आज जो चीज 100 रुपए की है, आगे जाके वो 100 की नहीं होगी, वो 200 की, 300 की, 400 की हो गई. Okay, that you need to take into consideration, and that is why time value of money is important. You'll have to buy this laptop for like 1 lakh rupees right now. 1 साल बाद, 10 साल बाद वो 1 लाख का नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. Okay. And one like who tracks the market daily, they know that there is a lot of chip shortage being made in the market. हमारे जो भी लाइक कार्स होती हैं, व्हीकल्स एंड लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सब में चिप लगती है. एंड अगर वो चिप ही नहीं होगी, देन सप्लाई ऑफ दीज थिंग्स वुड बी लो इन दी मार्केट. एंड जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाता है. राइट? और अगर यही शॉर्टेज चलती रही, प्राइस आगे बढ़ने ही है इन टर्म्स ऑफ योर व्हीकल्स, इन टर्म्स ऑफ योर लैपटॉप्स, और your like utilities, or like the white goods as we popularly call तुम्हारा ये refrigerators, ACs and ये सब, like we call them as white goods. Okay, so time value of money. Again, a lot of people ask me, and the same doubt that came to me at the time, like when I was teaching the chapter of capital structure. People were talking about debt. Why does the bank, like let's take a simple example, like if we take loan from the bank, why does the bank charge us the rate of interest? अगर हमने 2 लाख का लोन लिया है तो ideally we should repay just 2 lakhs only, right? अगर 2 लाख का लोन लिया है तो 2 लाख की पेमेंट करें वापस. जब हमारा बस प्रिंसिपल अमाउंट है तो हम प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस करें. But why the bank charges us more interest, and sometimes the amount of interest, it crosses the principal payment as well. 2 लाख का लोन लिया होगा, 2 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट होगा, इंटरेस्ट 3 या 4 लाख का होगा. सो दैट इज समथिंग डिफरेंट. तुम जितना अपने लोन रीपे करने में तुम टाइम लगाओगे, उतना लाइक इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. सो दैट इज वन थिंग डिफरेंट. बट व्हाई डू दे चार्ज दिस इंटरेस्ट? इफ आई टेक अ लोन ऑफ 2 lakhs टू बी लाइक रीपेबल आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, मैंने 2 लाख का लोन लिया, मैंने बोला कि 5 साल बाद में लोन को चुका दूंगा, तो मुझे बस 2 लाख देने चाहिए वापस. ये इंटरेस्ट क्यों लग रहा है कि 6% पे इंटरेस्ट आपको लोन दे रहे हैं, 5%, 8%, 9%? अगर मैं पर्सनल लोन ले रहा हूँ, हाँ, तो 9% तो लाइक मिनिमम होगा ही होगा. ओके, एंड लाइक इट फर्दर रेंजेस टू 9, 10, 11, 12, 13%, राइट? सो दीज थिंग्स तो होनी है ना? तो इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? फर्स्ट रीजन, ऑब्वियसली द फर्स्ट रीजन इज they want to be sure about their money. So that is a common reason.
अगर कुछ ऐसा हो गया कि 2 लाख रुपए आप चुका नहीं पाए, एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ रिकवरी वुड बी मेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. सो दैट इज वन रीजन, बिकॉज इंटरेस्ट आपको मंथली पे करना होगा. तो हो सकता है कि इंटरेस्ट पेमेंट ही आप इतनी ज्यादा पे कर दो, अब प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा आप इंटरेस्ट पेमेंट पे कर दो. तो अगर मैं डिफॉल्ट कर जाता हूँ तो एटलीस्ट दे वुड हैव द इंटरेस्ट पेमेंट, उनका लॉस कम होगा. दो दे स्टिल लाइक दे ट्राई टू रिकवर द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल, उनके वो प्रोसेस चलते रहेंगे, बट एटलीस्ट उनका एक लॉस मिनिमाइज हो जाएगा कि दे आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी. सेकंड सेकंड इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी? उन्होंने 2 लाख मुझको दिए, उस पे उनको मैं हर साल 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ. 8% में 2 लाख पे उन्हें दे रहा हूँ, मतलब कि 16,000 का अमाउंट उन्हें मैं दे ही दे रहा हूँ. मुझे लोन देने के बजाय दे कुड हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट और सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. वहां पे क्या पता उनको वहां से भी रिटर्न आ रहा होता. एक तो है कि 2 लाख रुपए तुम्हारे पास बट बस पड़े हैं, तो इट इज जस्ट एन आइडियल कैश. अब उस 2 लाख रुपए के पास बैंक के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो स्टॉक मार्केट में डाल दे बैंक एंड वहां से पैसा कमा ले, या वो किसी को लोन दे दे. तो जितना वो स्टॉक मार्केट से कमाता एटलीस्ट उतना अमाउंट उसने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया. तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इतना उसे मार्केट से मिल सकता था, तो उसने एटलीस्ट उतना मतलब कि लेंड कर दिया, लाइक उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट. थर्ड कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. First, talking about the risk preservation. Second, talking about opportunity cost. And third is the time value of money. वो 2 लाख रुपए आज मैंने करे हैं बोरो बैंक से, आज लोन लिया मैंने 3 जनवरी 2022 पे. क्या एक साल बाद, एंड मैंने ये लोन 5 साल के लिए लिया, मैंने बोला कि 5 साल बाद मैं रीपे कर दूंगा पूरा लोन. तो 5 साल बाद के 2 लाख की वैल्यू 2 लाख रहेगी या नहीं? ऑब्वियसली नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. वो 2 लाख रुपए बैंक के लिए कुछ नहीं है. सेम एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए अगर मैं लैपटॉप के लिए आज दे रहा था कि 1 लाख रुपए का लैपटॉप है एग्जैक्ट, तुम 1 लाख रुपए का ले लो. अगर 10 साल बाद में 1 लाख रुपए दूंगा और वो लैपटॉप अगर 2 लाख का हो गया, तो 1 लाख से तुम नहीं खरीद सकते. तो 10 साल बाद मुझे तुमको 2 लाख देने ही पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 1 लाख, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, because of the rising rate of inflation, the rising prices of the commodities, and lowering down of purchase power of my money. Similarly, अगर 5 साल बाद में 2 लाख बैंक को दूंगा, तो वो 2 लाख बैंक के लिए कुछ होंगे ही नहीं, बिकॉज उन 2 लाख की वैल्यू एज पर द मार्केट कंडीशंस, एज पर इन्फ्लेशन 4-5 लाख हो चुकी होगी. ठीक है. तो टू टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू एंड टू गेट देयर मनी बैक along with interest, so that the future amount can match with the inflation amount. ठीक है. उस टाइम का जो 2 लाख होगा, आज का तो है 2 लाख, 5 साल बाद उस 2 लाख की वैल्यू हो जाएगी 4 लाख. तो 4 लाख के बराबर का दे विल accumulate money from me at least in the form of the principal plus interest. Their more role like would be of the interest payment. ठीक है. बिकॉज 5 साल बाद अगर उनको मैं 2 लाख भी दे रहा हूँ, 2 लाख की कुछ वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो 2 लाख तो 5 साल पहले था ना. तो अगर 5 साल बाद मैं चुका रहा हूँ, तो वो 2 लाख या तो बैंक कहीं और लगा देता 5 साल के लिए, जहाँ पे शायद उसको 15% का रिटर्न मिल जाता या फिर 20% का रिटर्न मिल जाता. तो उसने मुझसे एक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लिया, विच इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट. ठीक है. कि 5 साल बाद अमाउंट बैंक को बढ़कर मिले वापस, ताकि सो दैट इट कैन एडजस्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट व्हाई पीपल चार्ज इंटरेस्ट रेट. तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए तुम लोन ले रहे हो, कोई फर्क नहीं है, बट अगर तुम लॉन्गर पीरियड के लिए ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेट लगना ही लगना. ठीक है. दैट इज वन थिंग people need to take into consideration. So that is the concept of time value of money. ठीक है. In time value of money, you people might have heard about these concepts: simple interest, compound interest, like very basic things. Simple interest, how to calculate the simple interest, right? For simple interest, we have a basic formula: P into R into T divided by 100. This 100 is for the R basically. P is basically your principal amount. R is the rate of interest. And T is the time period. P is the principal amount.
मान लो कि दो मैं लाइक मतलब कि 2 लाख का लोन लिया है या 10 लाख का लोन लिया है, सो दैट इज माई प्रिंसिपल अमाउंट। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आई हैव टू पे, 8% का, 5% का। एंड टी मैंने कितने टाइम तक का लोन लिया। मान लो कि 1 लाख का लोन लिया है at 8% rate of interest for 5 years. So calculate the simple interest. When you do this, what is the answer? 40,000 rupees. Hmm. That is the simple interest which you are paying annually. ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के आइडियली लाइक क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादा। सिंपल इंटरेस्ट के आइडियल इतने नहीं आते बिकॉज इट इज बेसिक। कि प्रिंसिपल की वैल्यू दे देंगे, आर की वैल्यू दे देंगे, टी की वैल्यू दे देंगे। कभी कभार बहुत क्वेश्चंस में होता है कि सीधा एस आई की वैल्यू दे देते हैं, पी की दे देंगे, आर की दे देंगे एंड टी निकालना होगा। So that is you have to like interchange the formula and calculate it. So that is something basic like when we talk about the simple interest. ठीक है। सिंपल निकालने को बोल दिया तो इट इज इजी। बट कभी कभार होता है कि पी नहीं देते, मतलब कि प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं देते हैं बाकी तीनों वैल्यूज दे देते हैं। कभी कभार आर की वैल्यू नहीं देते हैं बाकी तीनों वैल्यू दे देते हैं। कभी कभार आई की वैल्यू नहीं देते हैं बाकी तीनों वैल्यू दे देते हैं। So that is something which you can calculate by interchanging the formula and mathematical substitution. ठीक है। बट मेन चीज हमारी स्टार्ट होती है व्हेन वी टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो समवन आस्क यू, गिव मी अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टॉक मार्केट। अब हाउ इज कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट? इन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 100 रुपीज का अगर लोन लिया है तो फर्स्ट ईयर में भी जो इंटरेस्ट रेट होगा, अगर 10% का है इन फर्स्ट ईयर, सो दैट वुड बी 10 रुपीज। इन सेकेंड ईयर जो वो 10% लगेगा वो स्टिल 100 का ही लगेगा, 10 रुपीज। थर्ड ईयर में भी वो 10% जो लगेगा 100 का ही लगेगा, 10 रुपीज। फोर्थ ईयर में भी 10 ही होगा, फिफ्थ में भी 10 ही होगा अगर 5 साल का लोन लिया। बट वट हैपन्स इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, 100 रुपए का है, ठीक है, उस पर 10% लगाया, 10 हो गया। अगले साल 100 + 10 पे लगेगा 110 पर 10%, 11 रुपए। ओके। अब अगले साल 111 + 11 रुपए इन थर्ड ईयर, 111 + 11, 121। अब इसका 10% लगेगा। ओके, 12.1। नाउ दिस विल अगेन बी एडेड इन लाइक 121। ओके। सो व्हाट हैपेंस, जो भी तुम्हारा फाइनल अमाउंट आ रहा है, जैसे 100 रुपए पे लाइक 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, 10 वो 100 में जोड़ दिए वापस, वैल्यू हो गई लाइक 110। 110 पे फिर 10% इंटरेस्ट 11, उसको फिर 110 में जोड़ दिया। एंड दिस इज द थिंग एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच योर स्टॉक मार्केट ऑल्सो वर्क्स अपॉन। एंड दैट इज वाई द मनी मल्टीप्लाइज फास्टर इन स्टॉक मार्केट। 100 रुपए डाला है तो का मतलब कि 10% का एवरेज का चल रहा है रिटर्न, अगले साल 110 हो गया, तो जो भी तुम्हारा फाइनल रिटर्न मिलेगा तुम्हें फॉर द नेक्स्ट ईयर वो 110 पे मिलेगा, वो 100 पे नहीं मिलेगा। अगर तुमने किसी से लोन लिया है एंड लोन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो तुम्हारा लॉस है। बट अगर तुमने किसी को लोन दिया है एंड विच इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो तुम्हारा प्रॉफिट है। बट आइडियली द लोन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसमें लाइक कंफ्यूजन मत करना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन विल डू टुमारो, but like before that, let's try to understand the formula of compound interest. It is basically principal into 1 plus r to the power of m.
R is the rate of interest, P is the principal, M is the time period. मान के चलो, ठीक है. एंड दैट इज इन केस ऑफ एनुअल का फॉर्मूला है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है. अगर वो बोले कि सेमी एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, तो क्या करोगे? P इंटू 1 प्लस R/2 हो जाएगा, ये 2. ठीक है. और मान लो तुम साल में 2 बार ही पेमेंट करो, तो ये वाली वैल्यू इंटू 2. मान लो कि अगर 5 साल के लिए लोन लिया है, which is paid semi-annually on a compounded basis. So this will be 5 into 2. अगर क्वार्टरली है, 1 plus R divided by 4 M into 4. That is one thing you need to know. If it is monthly में होता है 12. R को भी 12 से, मतलब जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उससे तुम मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. इफ इट इज सेइंग वीकली, एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 डिवाइडेड बाय 52 M into 52. If it says डेली, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 M into 365. एनुअली हो गया, सेमी एनुअली हो गया, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया. इससे ज्यादा केसेस नहीं आएंगे एग्जाम में. ठीक है. तो दीज आर लाइक सम, एंड दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला. मतलब 1 plus R to the power of M तो रहता ही है. सेमी एनुअली है तो 2 से अगर डिवाइड करा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो. क्वार्टरली है 4 से करा है 4 से मल्टीप्लाई. मंथली है 12 से डिवाइड, 12 से मल्टीप्लाई. राइट. इफ इट इज वीकली, 52 से डिवाइड एंड 52 से मल्टीप्लाई. इफ इट इज डेली, 365 से डिवाइड एंड 365 से मल्टीप्लाई. Okay, so that thing you need to understand, and we'll try to do some practical questions upon this. That is tomorrow, in the tomorrow session at 7:30 p.m. Okay, so this is what up till now. See you